Hello everyone, a very good morning to all of you. Dear students, today I would like to teach you a new poem, Childhood. Childhood poem is composed by Marcus Nutton, a well-known poet of imagery and symbolism. In this poem, the poet laments over his loss of childhood. So before going to say anything, I would like to give you 3 or 4 sentences to give you the exact basic idea of this poem. See, childhood is an adult's lamentation over his loss of his childish innocence. Childhood is an adult's lamentation over his loss of his childish innocence. The poet feels disappointed because he thinks being a child was better than being an adult. Okay, a child's life is, जो बच्चे का जीवन होता है वो ज्यादा बेटर कभी मानता है, लेमेंट करता है, दुख अभिव्यक्त करता है. A child's life is peaceful. Child life is peaceful and really sweet. While adult's life is what? Full of worries, tension, so on. Childhood is an adult's lamentation, dukh, over his loss of childhood or childish innocence. The poet feels disappointed because he thinks being a child was better than being an adult. A child's life is peaceful and really sweet, while adult's life is full of suffering, worries, tension, and so on, anxiety. So here I would like to say that the poet in this poem creates the various spot or various time moment when he might consider that he may lose his childhood. These circumstances, occur a different situation altogether. See, first thing after that you have to know is the perspective of the poet of being a small child or as being an adult. Here I provide the precise data. As far as child is concerned and adult is concerned, see, the first thing you get to know here is carefree. Second thing,
cool, happy, and less worried. Third thing, free to do anything. May all these things possible for adult? See, always complex and frustrated. Always frustrated, fake personality, about the adult, full of anxiety, full of anxieties, or fear of war, death, and loss. Dear students, see, I provide a precise data for you in the, if we look towards a child and the perspective of adult, child always remains carefree, okay, cool, happy, and less worried, free to do anything. But the life of adult is very complex and frustrated, fake personality, so off, full of anxieties, tension, fear of war, death, and loss. That's why it is being said that the period of childhood is spring of life, the prime time of life, the best period of life. But it is very difficult to access the exact spot, the exact moment when the poet lost his childhood. So here on we see the different situation when the poet comes to know that maybe at that particular time he lost his childhood. See, it's very important to acknowledge these situations, this particular period of time, and the particular period of time, let's see, the first is ceased to be 11. You must remember, when came to know about hell and heaven. The second thing. Third, adult's real character. And fourth, about his mental capacity, about mind, and at last, forgotten place. Or you can say face of an infant. See, ये पड़ाव है, एग्जैक्टली वो टाइम है जब कहीं ना कहीं सोचता है कवि कि संभवतः उस दौरान उसका बचपन चला गया, उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत समाप्त हो गई। और हर एक स्टेंजा में हर एक तरीके की सिचुएशन क्रिएट की गई है। फर्स्ट ceased to be 11. The poet says that exactly may be possible that when he crossed the age of 11, at that time he lost his childhood. The second thing is when came to know about the hell and heaven. What is hell and heaven? A child is full of innocence, you know all very well. And in this period of innocence, if the elder says that there is a particular spot of hell and heaven, so its liability is on the highest level for a child. But let me tell you, hell and heaven are not exist in the practical world. When a child came to know the point that there is no physical spot on the planet Earth where you can find hell and heaven, and there is no mention of hell and heaven in any book of geography, then he came to know that this place actually doesn't exist. क्या उस समय उसको महसूस हुआ कि उसका बचपन समाप्त हो गया? एक और सिचुएशन क्या है जब अडल्ट के रियल कैरेक्टर के बारे में उसको पता चलता है,
जब ये पता लगता है कि adults जो है they talked and praised of love several times but they didn't act lovingly, they doesn't act lovingly, तो इस पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या उनको ऐसा लगा कि उनका बचपन जो है वो चला गया। सी about mind here means exactly the particular period of time when a poet comes to know that he has his own mind। वो रैशनल तार्किक हो सकता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, मेक हिज ओन डिसीजन, और उसके ऊपर अपने आप को कायम रख सकता है। जब उसको पता चला कि उसका अपना खुद का दिमाग है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है और दूसरे लोग जो बता रहे हैं उसकी बजाय उसकी खुद की अपनी समझ हो सकती है, तो क्या वो समय था जब उसका बचपन चला गया। एंड एट लास्ट क्या कहता है, फॉरगॉटन प्लेस, कहीं भूले बिसरे स्थान पर चला गया, फुल ऑफ फेस ऑफ इन्फेंट। और जब वो किसी बच्चे के चेहरे को देखता है, इन्फेंट के फेस को देखता है, तो कहता है कि उसी में उसका बचपन खो करके रह गया। So these are the situation. So dear students, what we have to do is just take the poem word by word. See, in the very first stanza, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Could not be found in geography, and therefore could not be. Was that the day? When did my childhood go? See the first stanza just in front of you. When did my childhood go? बचपन कब चला गया? Was it the day I ceased? Ceased here means bring to an end. क्या कहेंगे? Bring to an end. To be 11. हो सकता है एग्जैक्टली जब 11 इयर्स पूरे हुए हों अपनी लाइफ के, उस समय बचपन चला गया हो। Ceased to be 11. Was it the time I realized? या जब मैंने महसूस किया about hell and heaven, सवाल फॉरनर के बारे में। ये अस्यूम किया जाता है कि मरने के पश्चात व्यक्ति हेल में जाता है या हेवन में जाता है, इस प्रकार की असम्पशंस रहती हैं सोसाइटी में। बच्चे के तौर पर उन पर विश्वास करना सहज होता है, लेकिन एक टाइम आता है, उस टाइम पर एग्जैक्टली वो समझता है कि किसी ज्योग्राफी के बुक में इसका वर्णन नहीं है, किसी प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। कहता है कि जब मुझे ये पता चला अबाउट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि उनका ज्योग्राफी में कोई स्थान नहीं है। यू नो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लैंड, अर्थ, प्लैनेट, flora and fauna and so on. So there must be the place, the spot where hell and heaven must exist, but in reality they doesn't. So when I came to know that hell and heaven doesn't exist in the world, at that time he may have lost his childhood and therefore could not be was that the day। क्या उस समय बचपन चला गया, मासूमियत चली गई,
जब पता चला कि हेल और हेवन का किसी ज्योग्राफी की किताब में कोई वर्णन नहीं मिलता और संभवतः पॉसिबिलिटी ये है कि ये संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, तब ऐसा महसूस हुआ कि शायद बचपन चला गया हो उस समय। एग्जैक्ट स्पॉट का पता नहीं है। दो सिचुएशन है, एक तो है जब 11 ईयर्स पूरे किए और एक जब हेल और हेवन के बारे में वास्तविकता का पता चला। लेट्स सी the next stanza. I would like to write down, when did my childhood go? Is it the same sentence? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? All they seemed to be. They talked of love. They talked of love and taste of love, but did not act lovingly. Was that the end? See, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? उसका एक्सेप्शन एक तरीके से मंत्रणा मानना क्या है अडल्ट्स के बारे में, वो उसको वैसे प्रतीत नहीं होते प्रैक्टिकली। कहता है कि क्या एग्जैक्ट वो सिचुएशन थी when he came to know that adults are not exactly this they are looking or they have somewhere disguised themselves, that adults were not all they seemed to be, जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे दिखाई देते हैं, वैसे वो थे नहीं। They talked of love, they talked full of love and praised. Here you may say religious speeches, sermon, ओके, धार्मिक मंत्रणाएं बातें जब वो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसे हैं नहीं। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, ओके, was that the day when I came to know that he may have lost his childhood. So here on, one thing you have to learn is the acknowledgement about the adults. उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना। बच्चे के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग पाता है जब उनके बारे में जो अवधारणाएं जो वो देखता है सुनता है वो ठीक उसके विपरीत मिलते हैं। वो प्रीचिंग करते हैं लव के बारे में बट डिडंट एक्ट लविंगली। Was that the day when he lost his child? See the next part. See the next part. Was it when I found my mind? मैंने कहा था माइंड के बारे में भी एक पर्टिकुलर बात आती। क्या उसको पता चला कि वो तार्किक है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है? उस समय उसका बचपन कहीं खो गया। तो देखिए यहीं इस स्टेज में ये बात की गई है, when I found my mind was really mine, was really mine.
to use whichever way I choose. Producing thoughts. Producing thoughts that were not those of other people. Okay, but my own and mine alone. Was that the day? बहुत अच्छी बात यहाँ पर। ये एक सिचुएशन हो सकती है, ये एक परिस्थिति हो सकती है जब पता लगता है कि उसके पास अपना खुद का दिमाग है, वो अपने खुद डिसीजन ले सकता है, अपने बारे में तार्किक हो सकता है, अच्छे भले के बारे में सोच सकता है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, द वे आई वॉन्ट टू यूज माई माइंड, I can use. Producing, I can produce thought that were not of other people. बच्चा जो है according to others, क्या करना है क्या नहीं करना है वैसे रहता है, उन्हीं की तरीके की एक अपनी खुद की मानसिकता बना करके नहीं चलता। लेकिन एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसा एग्जैक्ट टाइम आता है जब लगता है कि मेरे पास भी वो तार्किक क्षमता है जहां पर मैं अपने खुद के डिसीजन ले सकता। So here what the poet wants to say that was it exactly the day when I found that I also have particular mind whereupon I can use my mind according to situation to take decisions. I can produce thought of my own self rather than anybody else, but my own, I have only my own mind that can be very useful for me. Was that the day? क्या ये वो दिन था जब लगा कि बचपन मैंने अपना खो दिया है। So students, take the last stanza of this poem right now. That is equally important. See, it went to some forgotten place that's hidden in an infant space. That's all I know. That's all I know. Forgotten place, किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया। मेरा बचपन संभव है किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया, forgotten spot पर चला गया। That's hidden in an infant space. And whenever the poet wants to see the face of an infant, he seems to be that was the particular time when he lost his childhood. It means that the exact time the poet came to know is the age of infants, age of, particularly I would like to say when he was the small child, a little child, just like an infant. That's all I know. यही मैं समझ पाया। कवि कहता है कि लगता है कि मेरा बचपन किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है। That's hidden in an infant space. वो किसी नवजात शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ जो पॉइंट कहना चाहता है वो ये है कि वो अपना बचपन किसी नवजात शिशु के चेहरे में देखता है। एंड दैट्स ऑल आई नो। और वही बातें हैं जो वो सारी की सारी चीज़ें एक एग्जैक्टली आकर के कंक्लूड करता है कि इन्फेंट का जो चेहरा जब देखता है वो तो उसका लगता है कि वहीं पर उसका बचपन खो करके रह गया है, समाप्त हो गया है, फॉरगॉटन भूले बिसरे स्थान पर चला गया है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। फर्स्ट स्टैंजे में आपको क्या बताया गया है? सीज टू बी 11, नेक्स्ट में हेल, हेवन के बारे में, इससे आगे
एडल्ट्स कैरेक्टर के बारे में, इससे आगे आपका माइंड और फेस ऑफ ए इन्फेंट। ये सर्कमस्टांसिस हैं, ये पड़ाव हैं जहाँ पर उसको लगता है कि उसका बचपन कहीं पर चला गया, उस समय चला गया जब वो 11 वर्ष का था, या उस समय चला गया जब उसको पता चला कि स्वर्ग और नरक वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। जब उसको पता चला कि एडल्ट्स का जो रियल कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसा वो सोचते हैं, और जो माइंड के बारे में उसको अपनी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चला, क्या वो समय था। और लास्ट में एक क्लू देता है कि शायद किसी बच्चे के चेहरे में उसका बचपन सिमट करके रह गया है। सो स्टूडेंट्स, I hope you understand. And in the next part, I would like to discuss all the important questions from the part. Okay.